Hello everyone, this is Ekta Bhage. Today we will learn Class 6, Chapter 1st of Science NCERT, that is Components of Food, the building block of life. So in previous classes we have studied that every state has its unique food item in India. Like Punjab has rajma, sarson saag, Andhra Pradesh has tur dal, buttermilk, etc. So every state has its unique food item. So from food, we get nutrients. So we will understand today nutrients. Nutrients are essential substance our bodies need for growth, energy and development. हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत होती है जिससे हम ग्रोथ करते हैं, एनर्जी आती है, डेवलपमेंट होता है. So basically they are classified in two main groups. First group is macronutrients and second group is micronutrients. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को लार्जर अमाउंट में जरूरत होती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स. Micronutrients needed in smaller amounts like vitamins and minerals. Now, the main question is, do all food item contains all nutrients? For this, we have to test. So let's test. So firstly, macronutrients is carbohydrates. Carbohydrate, common form of hydrate carbohydrates in food is starch or sugar. मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट की कॉमन फॉर्म होती है फूड में वो स्टार्च या शुगर के रूप में होती है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देती है. सो वी विल टेस्ट फॉर स्टार्च. सबसे पहले टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम. Then you have to put 2 or 3 drops of dilute iodine solution on that food item. Then you will observe that the food item change in black or blue color. So the food item will change black or blue color. It indicates that that contains starch, that is carbohydrate. Now, second macronutrients is fats. So test for fats. First, take a small quantity of food item and wrap it in a piece of paper and crush it. यानी कि आपको उसमें एक पेपर में रखना है और उसे क्रश करना है. Just remember that paper should not tear. Okay. Then you will see that there will be patches. Oily patches on paper shows that there is fat. Now, our next macronutrient is protein. Test for protein. Take a small quantity of food and firstly make a paste of it or powder it because it would be in a form of solid, right? So, and take some of this in a clean test tube. जो आपके पास सॉलिड के रूप में प्रोटीन होगा उसे आप पहले एक पेस्ट या पाउडर के फॉर्म में बना लें और उसे एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालें. आफ्टर दैट you will add 10 drops of water to it and shake the test tube. यानी कि आपको 10 ड्रॉप वाटर के डालने हैं और फिर उसको टेस्ट ट्यूब में शेक करना है. Then add 2 drops of solution of copper sulfate. फिर आपको उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट के डालने हैं. Then add 10 drops of solution of caustic soda to taste to test tube and shake well and wait for a few minutes. 10 drop solution caustic soda का डालने के बाद
आपको थोड़ा शेक करना है और कुछ मिनट के लिए वेट करना है. You will observe that the food item will change in violet color. The violet color indicates protein. Now we will move on micronutrients. Firstly, we will talk about vitamins, that is protective essentials. यानी कि vitamins जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए कम अमाउंट में जरूरी होते हैं, लेकिन it's very necessary for our body, which is maintaining health and protecting against deficiency disease, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं और हमें अलग अलग बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं. Like vitamin C, which prevents scurvy. Scurvy disease से हमें बचाता है. It found in citrus fruits, amla and tomato. Then we have vitamin A, essential for vision and skin health, जो हमारी vision के लिए और skin की health के लिए important होता है. It's found in carrots, leafy greens. Next, we have vitamin D, helps absorb calcium for strong bones, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम बनाए रखता है, स्ट्रॉन्ग बोन्स करता है. इट प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट, यानी कि आपको विटामिन डी सनलाइट से आसानी से और ज्यादा मात्रा में प्राप्ति हो सकती है. Now we have next micronutrient, that is minerals. The body regulates. Minerals do not provide energy, but they are vital for healthy bones, teeth, and blood formation. They regulate key life processes. यानी कि जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी तो नहीं देते हैं, लेकिन हमारी बोन्स को हेल्थी रखते हैं, टीथ को, ब्लड फॉर्मेशन सही रखते हैं. दे रेगुलेट की लाइफ प्रोसेस, यानी कि हमारी दे आर रेगुलेटिंग की लाइफ प्रोसेस, राइट. Like calcium, which is important for strong bones and health. Phosphorus, that's strong bone structure and energy. Iron, healthy blood and oxygen. Now we have silent partners. These are water and roughage. Often overlooked, water and roughage are indispensable for health and functional body. Enables nutrients absorption and helps remove waste from the body. We must drink. यानी कि जो वाटर है वो हमारी बॉडी से जो वेस्ट है उसको रिमूव करने में मदद करता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए. Next, we have roughage, that is dietary fiber found in plant foods. Roughage aids digestion and prevents constipation by adding bulk of food. यानी कि ये हमें ज़्यादातर प्लांट फ्रूट्स फूड से मिलता है और ये हमें बचाता है डाइजेशन से, मतलब डाइजेशन करता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, जो हम हैवी खाना खाने की वजह से होते हैं. For this all, we need a balanced diet. So building a balanced diet. A balanced diet contains all nutrients in the right proportion to keep the body healthy and energetic. हमारी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए हमें सभी प्रकार के ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीड इन अ राइट प्रोपोर्शन. लाइक फर्स्ट, ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स, यानी कि हमें अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग वैरायटी के फूड्स कंज्यूम करने चाहिए, जो प्लांट बेस्ड भी हो, एनिमल बेस्ड भी हो. सेकेंड, इंक्लूड ऑल न्यूट्रिएंट ग्रुप्स, यानी कि ऐसे मतलब आपके ग्रुप्स में ऑल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट्स भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो. थर्ड पॉइंट, कुक एंड क्लीन प्रॉपरली. प्रॉपर वॉशिंग एंड कुकिंग हेल्थी रिटेन न्यूट्रिएंट एंड रिमूव्स जर्म्स. यानी कि आपको सबसे पहले अच्छे से प्रॉपरली वॉश करना है, फिर उसे अच्छे से कुक करना है. कुक भी ऐसे करना है कि आपका न्यूट्रिएंट जो है वो निकल ना जाए, खराब ना हो जाए. सो रिमूव, और आपके जो जर्म्स हैं वो भी रिमूव हो जाए. Now, deficiency disease. If person do not get balanced diet for a long period of time, the person may suffer from deficiency.
If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Let's read about more diseases that occur due to lack of other nutrients. Like simply we say that अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते लंबे समय तक तो आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। लाइक अगर आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लंबे समय से नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी ग्रोथ करना बंद कर देगी। सो हम आगे और कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली डिसीज के बारे में जानते हैं, जैसे मिनरल्स और विटामिन एंड मिनरल्स देयर आर विटामिन ए, लॉस ऑफ आई विजन, विटामिन ए की कमी से आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। सेकंड, विटामिन बी वन, दैट वेल डिफिशियंसी डिसीज इज बेरी, इससे आपकी बॉडी मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगी। वेरी लिटिल एनर्जी, आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी। विटामिन सी स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स वॉन्ट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, आपके जो ब्लीडिंग गम्स जो हैं वो ब्लीड करने लगेंगे और आपके जो बाउंड्स हैं वो लंबे समय के बाद हील होंगे। विटामिन डी, दैट इज रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से आपको बोन एंड टूथ डिके होगा। The symptom is weak bones, tooth decay. Then iodine, that is goitry. Symptoms of glands in the neck appear slower. Mental disability, यानी कि आपकी जो neck की glands हैं वो सूज जाएंगे। और mental disability in children. Next one is iron. Deficiency disease is anemia and symptoms are weakness. So now this chapter has been finished. I hope you learned this in an easy way. Thank you so much.